Today I am going to tell you about the different parts of this hibiscus flower. The first thing, as you can see, these colored leaves, red colored leaves, these are known as petals, and the complete cycle of petals is known as corolla. And the green leaves just below this is these are known as sepals, and the complete cycle is known as calyx. Okay, and the sepals protect the बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं ये इनिशियल स्टेज में. ओके, एंड देन दिस स्ट्रक्चर, लुक एट दिस. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस पार्ट, द येलो पार्ट्स. एज यू कैन सी, अगर हम इसको टच करते हैं तो हमारे हाथों पर भी ये येलो येलो पाउडर, इस तरह का सब्सटेंस आ जाता है. एक्चुअली दीज येलो बॉल्स आर द एंथर्स. ओके, एंड इनके अंदर जिस पाउडर की मैं बात कर रही हूँ, दीज आर एक्चुअली द पॉलन ग्रेन्स. तो एंथर्स, inside there are pollen grains, and this part, this is represent the male part, anther and pollen grains, which is known as stamen. Then the female part, the first upper part is the stigma, then this tube-like structure, style, and at the bottom there is ovary. So let's just cut the flower so that we can see the ovary. Okay, now just a minute. So stigma, then style, and इसके नीचे यहाँ पर हमें मिलेगा ovary. So first we will remove the calyx, means the sepals, and इसको remove करने के बाद हम इसके सेपल्स को, पेटल्स को भी हटाएंगे. ओके, कलरफुल पार्ट, ये कलरफुल इसलिए होते हैं सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विच हेल्प इन द पॉलिनेशन. एंड रिमेंबर, व्हेन द pollen grains fall on the stigma of the same flower, then it is known as self pollination. Okay, same flower. And if the pollen grains are falling on the stigma of another flower, which may be of the same plant or other plant, then this is called cross pollination. And remember, the pollination take place between the same species of two flowers. Okay, otherwise the pollination will be failed. Successful pollination के लिए same species का flower होना चाहिए. And now I am going to cut it down so that we can see the ovary, which is at the bottom. Okay, pause. Look, just I am going to remove this outer covering. You can see this is the style जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. स्टाइल इस आउटर कवरिंग के, ओ सॉरी, ये यहाँ से ब्रेक हो गई मुझसे, ये कॉन्टिन्यूशन में थी. ओके, स्टिग्मा देन स्टाइल, एंड एट द बॉटम ये जो आपको पार्ट दिख रहा है लास्ट में, दिस इज एक्चुअली द ओवरी. And if I cut the ovary, then we will get the ovules inside this. And look, जब मैंने इसको कट किया, अगर आप जूम करके देखेंगे तो there are some fine dot, small, very small ball-like structures. These are actually the ovules. Okay, and when the pollen grains reach at the stigma, they pass through the style, and when they reach here and fuse with the ovules, then a seed is formed, and the ovary converts into the pulpy part, which makes the fruit. Okay, that's it.